this matchup, one spot, and we've got two clubs, both of them in absolute contention of this one, and neither of them could settle with a draw. Welcome, folks, once again. You are watching the eISL Season 2 brought to you by Nodwin Gaming. I'm Fixis. I'm joined along with TT, and we head into another very exciting matchup, and this is where the stakes are touching the roof, right? We've got ATK Mohun Bagan taking on Hyderabad FC and TT. एक्साइटमेंट के तो बारे में पता है कि टाइट कितने हो आप अभी, हालत कैसी है आपकी, सब ठीक है? देखिए इस बार कहने के सिचुएशंस अलग है। इधर दोनों ही क्लब्स को जीतना होगा। टाइट तो इधर क्लब्स के हैं सिचुएशंस, क्योंकि उनको जीतना ही है। बट एक चीज है जो हम लोग अभी तक कैलकुलेट नहीं किए थे, अगर ड्रॉ भी होता है वो भी हैदराबाद के लिए चल जाएगा, लेकिन ये ड्रॉ नहीं चलने वाला है एटीके के लिए। एटीके को जीतना ही होगा, क्योंकि ड्रॉ अगर हो जाता है हैदराबाद 12 पॉइंट पे पहुंच जाएंगे, जिधर वो सिक्योर कर लेंगे अपना पोजीशन। सो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग माहौल है, और क्या होगा, किस तरफ होगा, कौन से तरफ जाएगा, और एटीके जिस फॉर्म में है वो तो बिल्कुल भी इधर नहीं जगह देना चाहेंगे कि इधर थोड़ा भी जगह मिले हैदराबाद को। Yeah, I mean at this point, it's kind of a must-win matchup. Let's just say for both these clubs, right? And taking a look at who goes against who, it's going to be Vicky opening it up along with Genocid against him. And then we've got two wonder boys out there, Afnan and Warsi. This is one of those matchups I'm really excited about, because Afnan, the hero of ATK Mohun Bagan, against the warrior Warsi that we have. This player has sort of been the king of comebacks, right? Even Duggal had termed the face. I still remember that match against Bindratej in season 1. I think he was down 5 goals or something, and he still managed to go on and win the game. And he has also repeated those antics even in the season 2. But there have also been days, TT, where he has been thrashed also. So it's Varsi is always on the extremes. Either he goes big or he just falls crashing down. So there's nothing in the between. But yes, I'll be hoping that we get to see a cracker of a game. I'm pretty sure it's gonna be happening tonight. And yes, talking about the first matchup, TT, Vicky and Genocid. What do you have to say about this one? तो वो काउंटर पे बहुत ज्यादा खेलते हैं, बट आप स्लो प्लेयर को काउंटर उतना इजीली कर नहीं सकते। तो देखना होगा, इधर मुझे लग नहीं रहा कि उतना इजी होने वाला है जेनेसिड के लिए। और विकी को भी पता है कि इधर स्टेक्स कितना हाई है, प्रेशर भी रहेगा, और उसी के साथ कहने की जो सिचुएशंस है वो भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होते हुए दिखेंगे। टीम छाप दिया एक दूसरे का लाइनअप, बस वो एक मॉल्डिनी का डिफरेंस था, मॉल्डिनी एंड लूशियो आई गेस। फॉर्मेशन, the players, everything is almost mirrored. Just that one center back difference. There you can see Lucio and Maldini. That's all it is separating both these clubs right now, and they know they have to go really attacking from the get-go and need to score those early goals. So we've got ATKMB represented by Vicky from left to right, and we've got Genocid from right to left. Now Genocid, he's an amazing player, but this time he's made a few changes. We don't see Atal coming in, and I had to ask him, and he did give me an answer, but we'll talk as the game keeps on going. We might get to see him. But yes, coming back, Vicky quite patient with his build-up, passing on towards Ronaldinho, wanted to give towards Lionel Messi, but did not work out, which sort of leaves Genocid out for a counter-attack. बिल्कुल, देखिए इधर जेनेसिड के पास मौका तो था, लेकिन प्लेयर्स ज़्यादा थे नहीं इधर अटैक पे, तो जिसकी वजह से वो ट्रांजिशन हो नहीं पाया। बट बॉल कंट्रोल रखेंगे अपने पास, और उसी के साथ राइट हैंड साइड से हकीमी का ये रन बहुत ज़्यादा शानदार था, और वही जगह पे देखिए कोई भी गैप्स मिला नहीं जिसके थ्रू वो बॉल स्ट्राइकर्स के पास पहुंचा सके। बट अभी भी थोड़ा स्लो बिल्डअप की कोशिश, बट बीच से बॉल छीना जाएगा काउंटर पे इस बार विकी, लेकिन बेलिंगम का बहुत शानदार इंटरसेप्शन जिसके थ्रू बॉल कंट्रोल जा चुका है हैदराबाद एफसी के पास, और जिसके बारे में बात कर रहे थे कि इधर अगर एक ड्रॉ भी आ जाता है वो हैदराबाद एफसी के लिए बहुत ही सही रहेगा, इनफ रहेगा।
बट मैं नहीं चाहता कि कोई भी ड्रॉ के साथ खत्म करे। मैं चाहता हूँ वो कोई भी जीते, वो चाहे हैदराबाद एफसी हो या फिर एटीके मोहन बगान, वो एक विन के साथ जाके खत्म करे। It could go anywhere. It could go either ways. Anybody could just go on from here. All they need is those crucial, valuable 3 points. Where Hyderabad FC could maybe just settle with a draw, but I don't think that's the mindset they would have come out to play with. They would want to get that big fat W and make their way into the playoffs. And Genesis, can he do that? That's the big question. Again, utilizing the wings, just breaking free. He's got that explosive pace there now for that long pass onto which Ronaldinho yet again. But Vicky's defense seems to be quite tight. He is contesting for the ball on the midfield, has managed to retrieve it. But where does he go from here? How does he build up an attack? Because, you know, this is one of those battles that we are seeing, you know, going on around the midfield area where both these clubs are fighting for possession. And at those crucial junctions, one missed pass and things could completely go awry for either one of them. बिल्कुल, देखिए इधर हो सकता है सिचुएशंस थोड़ा सा इंटरेस्टिंग धीरे-धीरे करके। जेनेसिड की अगर बात करें तो जेनेसिड ज़्यादा जल्दबाजी नहीं कर रही। यूजुअली हम लोग क्या देखते हैं कि जेनेसिड 1-2 करते हुए निकल जाते हैं, बट आज शायद जेनेसिड भी बहुत ही शानदार तरीके से स्टडी करके आए हैं विकी को, और इसी वजह से थोड़ा स्लो बिल्डअप विकी जेनेसिड की तरफ से भी दिख रहा है। अभी के लिए विकी बहुत शानदार बॉल कंट्रोल तो रखे ही थे, और आपको क्या लगता है लाइक जिस तरीके से खेल रहे हैं इधर, देखिए बहुत ही अच्छा बॉल तो निकाला गया था, बट पेस उतना था नहीं, और उसी के साथ साथ मार्डिनी भी थे, इधर मौका मिला नहीं। बट फिक्सिस आपको क्या लगता है लाइक विकी शुरुआत में जो विकी थे, मुझे लगा जितना सारा eISL सीजन को आगे बढ़ता गया विकी अपने आप को चेंज करते गए। शुरुआत में बहुत सारे ओपनिंग्स इनको मिलते थे, वो भी गोल्स बहुत ज़्यादा करते थे, बट जितना लेट टाइम बढ़ता गया उतना उनका गोल स्कोरिंग तो कम हुआ, बट वो गोल कंसीड भी कम करने लगे, जिसकी वजह से इधर अफनान को जाके फिनिश जरूर करना पड़ता था, बट वो पहला गेम जो है वो कुछ ना कुछ करके ड्रॉ निकाल देते थे या फिर कभी कभार आखिरी गोल स्कोर करके जीत जाते थे। तो आपको क्या लगता है देखिए चेंज की वजह से क्या जेनेसिड को थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि अभी तक कोई भी प्रॉपर वैसे बिल्ड दिखा नहीं? You know, we've seen a lot of variations come out from Vicky this season, to be honest, right? Vicky has been getting a lot of Ws, has been getting quite a lot of draws also, but I think one of their weakest suit has been how they play with their co-op, right? And that sort of has been the Achilles heels for ATKMB. When it comes down to Vicky, you could still call him as the tip of the spear for this particular club, and he kind of gives them that perfect start. But it is that co-op game which kind of changes things around, where the other club tends to win, and then it has to come down to Afnan, who's got to take over the reins and manage to get those 3 points. And that has been one of the biggest hurdles. But for Vicky, I kind of feel that he's very stable player. Yes, of course, you as a player tend to evolve with. Initially, you've got those butterflies. It could go either ways, right? You're kind of nervous and excited at the same time. You tend to go on scoring goals. I think I still remember that 5-goal haul by Vicky, the first opening matchup against Odisha FC. That red card from Bhagya, that's where everything started falling down for Odisha FC. And that is where I think ATKMB have been shining through. But in those mid phases, that's where they started, dropping points. That's where they started getting those, draws, and that is where you kind of were not really happy with, because this is one of those teams that kind of have flustered up on those occasions when it really mattered, right? And 3 wins, 6 losses hasn't been the way that ATKMB would have made their run. But I'm pretty happy with how improved ATKMB have been as a club, especially considering how miserable the previous season had been. Right? They ended right at the bottom, forget about the playoffs. They were struggling for finding a single victory, single win, and I don't think that even happened. So this season, if you compare it, was much better, and I'm really impressed with how both these players have been playing so far. बिल्कुल सही। एंड जिस तरीके से वो अभी तक खेले हैं बहुत सारा स्टेबल, बहुत कामली परफॉर्म किए हैं, और ज़्यादा गैप्स भी इधर देखने के लिए मिला नहीं है। बट एक बेहतरीन मौका था, बट इधर लाजवाब सेव, डिफ्लेक्शन आया इधर वैंडे सार से,
जिसकी वजह से ये गोल हुआ नहीं। विकी ने जस्ट निकाल ही दिया था गोल, लेकिन देखिए ये आखिरी अटैक होने वाला है फर्स्ट हाफ विसल के पहले। पास, बॉल छीना जाएगा और उसी के साथ एंड हो जाएगा फर्स्ट हाफ। जेनेसिड, इनको समझना होगा कि वो बीच में एक भी गलती इनके लिए भारी पड़ सकता है। बट अभी तक जिस तरीके से विकी ने खेला है, यूजुअली देखिए विकी वर्सेस जेनेसिड, सीधी तरीके से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जेनेसिड का पल्ला थोड़ा भारी रहता है यूजुअली, जिस तरीके का सीजन गया या फिर जिस तरीके के प्लेयर्स हैं दोनों। लेकिन जो आपने कहा कि बहुत ज्यादा वर्सेटाइल थे इस पूरे सीजन के ऊपर विकी, अपने आप को ढाले अलग अलग पोजीशन पे, और जब जिसकी नीड थी उस टाइम पे उस तरीके का गेम उन्होंने डिलीवर किया, तो कहीं ना कहीं उसके वजह से भी बहुत कुछ चेंज होता हुआ दिखा है। और आज के दिन पे वो डट के खड़े हैं, जिधर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उनके क्लब को उनका परफॉर्मेंस निकल के आना। उन्होंने एक सिंगल गोल अभी तक कंसीड नहीं किया, बट अटैक अपनी तरफ से ज़रूर बहुत सारे बनाए। I think, Vicky has been one of those players. Look at that. He's been very calm and patient in his build-ups. Whereas we've seen on numerous occasions, Genesee, he's been playing on those counters. Even if you talk about possession, not a lot separating these two clubs, to be honest. So, considering the fact that we are still eyeing out for that first goal of this game, this match has been going quite tight. And why shouldn't it be? When the stakes are high, players cannot afford to be reckless, cannot afford to make those mistakes, as Genesee this time trying to change those dribbling moves, but one too many, and eventually was well defended by Vicky over there. अभी देखिए जिस तरीके से विकी अभी तक परफॉर्म किए हैं, जेनेसिड के ऊपर प्रेशर बिल्ड होना चालू हो गया है, क्योंकि जेनेसिड को भी पता है कि जब तक वो इधर से एटलीस्ट ये मेक श्योर नहीं करते कि उनको इधर से 3 पॉइंट मिलने वाला है, तब तक वो इधर शांत बैठ ही नहीं सकते। और वो इधर से बिल्कुल भी इस पूरे सिचुएशन पे बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किलें बढ़ता हुआ दिख सकता है। बट देखिए जेनेसिड मेनली वो ये मेक श्योर करेंगे कि एटलीस्ट वो इधर से 3 पॉइंट लेके जा रहे हैं, क्योंकि ड्रॉ के लिए तो कोई भी चाहता नहीं है कि वो ड्रॉ के लिए जाए, और ड्रॉ के लिए जाओगे तो हो सकता है कि कभी कभार आप आखिर में गोल कंसीड करके आप हार भी जाओ। तो इसी वजह से जेनेसिड वो जानते हैं कितना हाई स्टेक्स है, दोनों ही क्लब्स, नॉट ओनली जेनेसिड। और आज इसी वजह से जेनेसिड भी इतना ज़्यादा सेफ खेल रहे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि कोई भी गोल वो कंसीड करे। इसी वजह से उनका भी पेस थोड़ा कम दिख रहा है। बट फाइनली अटैक पे जाएंगे, और नहीं, बॉल इधर गलत जगह पे पास करके फिनिश किया। Yeah, I mean, quite end to end, seeing those lot of those midfield battles also erupting between these two players. And at this point, 60 minutes have already gotten into the game, and yet to see who scores the first one. Both of these players quite cautious, and they have to be honest at this point. Cannot afford that single margin of error, but a nice pass with Lionel Messi. Wanted to dribble through, wanted to take that shot, but Genesee, sturdy on his defense, did not let that slip away. And now he's looking to break free for a counter. Might go for a lob pass. No, goes for a dribble through with Ashraf Hakimi. It's to find, and yes, with Rudoled, this could be the golden chance. He takes that shot, and Genesee FC finally scores, and Hyderabad FC have gone a goal up right now. Both of these clubs, as you can see, during the halftime, making those changes, getting back to the meta formation 4-3-2-1, and have utilized it so far. Genesee, all he needed, that one room, that one window, and that is all it took. Perfect chaining of passes. Lionel Messi was cleared off, and yes, Hyderabad FC have gotten that much needed start. बहुत शानदार शुरुआत फाइनली मिल चुका है इधर हैदराबाद एफसी को, जिसके लिए इतने देर से कर रहे थे वेट। वो मुकाम अभी आ चुका है, पहला गोल भी आ चुका है, अभी बारी है डिफेंड करने की। देखिए एक गोल का फासला उतना ज्यादा होता नहीं है, वी नो, कभी भी ये फासला जो है वो कम किया जा सकता है, लेकिन जिस तरीके से अभी तक गया है गेम, आई थिंक ये एक गोल भी बहुत ज़्यादा मुश्किलों के बाद आया, और इसको डिफेंड करना होगा उस तरीके से। लेकिन बॉल गलत जगह पे छूटा, बट एम्बापे कोशिश कर सकते थे ड्रिबलिंग की, बट वो इधर गए थे लॉब पास के लिए, जो कि इधर डिफ्लेक्ट हुआ हकीमी के
बॉडी पे और बॉल चला गया हैदराबाद एफसी के पास। हैदराबाद एफसी अभी 11 पॉइंट्स में बैठे हैं। अगर वो ये पूरा मैचअप फिनिश करते हैं जीत के, देन वो 14 पॉइंट्स में पहुंच जाएंगे और उसी के साथ सिक्योर कर लेंगे अपना प्लेस। ड्रॉ भी होता है फिर भी 12 पॉइंट के साथ सिक्योर कर लेंगे, क्योंकि नेक्स्ट गेम के बाद भी अगर ड्रॉ होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 12 पॉइंट ही आएगा, तो 6 प्लेस जो है वो एटलीस्ट इधर मिलता हुआ दिखेगा। बट देखिए जेनेसिड कोशिश था, बट बॉल छीना गया, लेकिन नहीं, एक गलत पास। मुश्किल में आ सकते हैं विकी, ये दूसरा गोल हो सकता है, बट नहीं कर पाए कंट्रोल। Yeah, and this is where, Vicky, he's got to make some changes. And that at this point, at this junction, what does he do? Does he go all out on attack? Because, you know, ATK Mohun Bagan cannot afford to lose this one, right? It's a must win for them. And they have gotten so close to tasting playoffs. And at this point, it is going to shatter their morals if they face a defeat. Getting a draw in the first matchup is still a-okay for them, right? Then you could just hope to get another draw in the co-op or try to win that one. It's going to be a little difficult, but then again, I think Afnan is one of those players that can shoulder the responsibilities, that can take over the helm, can get them that W that they're hoping for, because this season Afnan has just been outrageous. But yeah, so far I think commencement of that second half, almost to that third quarter, we could see Hyderabad FC are starting to build on chances. And this is where ATK Mohun Bagan TT, they really need to respond back. हाँ, अभी अगर नहीं करेंगे बाद में जाके मुश्किलें बढ़ जाएगा, तो जितना जल्दी हो सके इधर रिस्पॉन्ड करने की ज़रूरत है, और एटलीस्ट एक गोल करने की तो ज़रूरत है ही। अगर वो जीत के फिनिश नहीं कर रहे तो ड्रॉ के साथ फिनिश करना होगा इस गेम को। बात कर ही रहे थे, थियो हर्नांडेज के साथ एडवांस करेंगे बॉल लेके लेफ्ट साइड पे, काफ़ी शानदार एक मौका मिला था, बट डिफेंस पहुंच चुके थे पोजीशन पे। शानदार पास, Oh my God! व्हाट अ सेव फ्रॉम साइड ऑफ एंड्रे सार। देखिए जगह उतना था नहीं, जिसकी वजह से शायद इधर थोड़ा सा इजी हो गया रहेगा सेव करना, बट देखिए जिस जगह पे बॉल मिला था उधर से गोल हो जाता है। आज काफ़ी शानदार खेल रहे हैं जेनेसिड, अगर उधर नहीं दबाते हुए तो शायद इधर कहानी कुछ अलग होता। Yeah, I mean, at this point, anything could have happened. And, we can see that Vicky is going all out. Sometimes just exposing, making his defense quite vulnerable. And I think Genocid is looking for those opportunities. Genocid, we've seen him make a few defensive errors, but tonight so far, he's been flawless. And now breaks through for another attack look with R9, looks for passing options, did not have a lot, went for a back pass, and he's got all the time in the world to just play around. As long as he keeps the ball in his attacking half, it's fine. But no, cannot afford to lose the ball like that. Eusebio has already gone for a run there. No, Vicky, he wants to make it count. He wants to make sure in that final attack he tends to score. And with Theo Hernandez looking for a few passing options, just trying to triple the ball, finding many, in fact keeping the last attack of the game to himself with Ruud Gullit. Jude Bellingham, constant chain of passing going on, trying to force that tackle out of Genocid and then maybe go in. Now has quite some option, maybe if he gets in open space could take a shot directly as we approach the stoppage time with this, with R9. He's ought to score, but before he could take that shot, Genocid breathing that huge sigh of relief, knows that this game is done for Hyderabad FC. They have done it. They have won that first crucial game and just one step closer to taste qualification. And the last season they sort of failed, but this season they want to ensure with the players that they have, the form that they are in, they get in and try to get into the finals and win it all. बहुत ज़्यादा शानदार ये गेम था इन टर्म्स ऑफ, हो सकता है कि गोल्स हम लोगों को ज़्यादा देखने के लिए मिला है नहीं, लेकिन ये जो कांटेदार टक्कर था ये हम लोगों को शायद बहुत ज़्यादा कम देखने के लिए मिला। सो लाइक इनसेन ये परफॉर्मेंस था। और लाइक क्या क्यों लेकर मैं बात करूं तो विकी को लेके
था, एक्सपेक्टेशन था, क्योंकि उन्होंने कहीं न कहीं अपने आप को इवॉल्व किया है। लेकिन जेनेसिड आखिर मोमेंट तक जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किए। विकी की तरफ से भी बहुत सारे मौके बने थे बाय द वे फर्स्ट हाफ के ऊपर, Yeah. जिसके ऊपर उन्होंने गोल कन्वर्ट नहीं कर पाया। अगर वो इधर इक्वलाइज़ कर देते तो आई थिंक मुझे लगता है कि और थोड़ा ईज़ी होता अफनान के लिए एंड उनके क्लब के लिए। बट अभी सिचुएशंस बहुत ज़्यादा टफ हो चुके हैं। डू और डाई, बैक टू बैक 2 गेम जीतने हैं। Yeah, and this is the storyline for ATKMB. They are going to be on a whole world of trouble right now because it's the co-op, and we haven't seen them be really amazing at that. But let's hope when they've got their backs against the wall, they make a comeback. Because at this point, just a mere draw isn't gonna make the cut for ATKMB. They have to anyhow TT win those 2 games, and to do that they'll have to win that co-op. The first game, I think, Genocide, eventually that little extra experience comes into play. Not a big goal scoring game, right? Just that one goal being scored in the entirety of 90 minutes. And we could feel that tension. We could feel the intensity. It's not like, Genocide was just getting away with goals or something. He had to fight for them. There were multiple occasions that he was trying to build that play from the wings, but I think Vicky was so well prepared, just trying to push him off every single time until that one chance, that one extra pass to Lionel Messi, making the whole world of difference. And then we saw even ATKMB in the second half did have that golden opportunity, but I do not know how that was saved. But yes, it is what it is, folks. As we are done with the first game of this fixture, we still have 2 more games to go, and yeah, this is where ATKMB, they will have to forget what has happened in the past. Does not matter how your co-op went this time, TT. They have to be flawless in order to beat a club like Hyderabad FC. For Hyderabad FC, they know they are tasting glory, almost on the verge of it, right? If they even manage a draw in this one, then it's sealed. It's set in stone. They are going to be heading to the playoffs. So yes, for Hyderabad FC, a little bit of a thin cushion being built up for there, but for ATKMB, they have got a mountain to climb. बहुत टफ होने वाला है ATKMB के लिए, क्योंकि वी नो कि इधर से 2 गेम्स जीत रहे हैं, वो भी बैक टू बैक। अफनान का आखिरी गेम जिस तरीके से गया था, अफनान ऑन कैम दिख रहे थे कि वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे काइंड ऑफ उस टाइम पीरियड के ऊपर, और हो जाते हैं। देखिए, जब आपके ऊपर सारा प्रेशर आ जाता है और वो प्रेशर का आपको हैंडल करना पड़ता है, और उस जगह पे आपको पता है कि आपके हाथों में पूरे क्लब का फ्यूचर डिपेंड कर रहा है कि क्या वो इधर प्लेऑफ्स में जाएंगे या फिर नहीं, तब हो जाता है अगर आप गोल कंसीड करते हो। बट इस बार तो कोऑप के ऊपर ही बहुत कुछ डिपेंड करने वाला है। सो विकी एंड अफनान दोनों को सिमिलरली इधर एक बेहतरीन परफॉर्मेंस देके जाना होगा अगर उनको इधर से आगे बढ़ना है तो, क्योंकि देखिए 2 गेम्स बैक टू बैक जीतना बहुत मुश्किल रहेगा। वॉर्सी की अगर बात किया जाए, अभी तो फिर भी हम लोग कोऑप के बारे में बात कर रहे थे, वॉर्सी की अगर बात करें, वॉर्सी को हम जानते हैं एज अ कमबैक जाइंट। जिस तरीके से वो चाहते हैं आखिरी मोमेंट पे, लाइक सबको लगता है कि 70 मिनट 80 मिनट तक कि हाँ तो जीत जाएंगे, 2-1 का लीड है, फिर अचानक से वॉर्सी जाग के उठते हैं और उसके बाद 2 गोल ठपाठप करके 2 गोल दागते और उसी के साथ 3-2 से मैच खत्म कर देते हैं। तो ये उनका कहानी रहा है पूरे एंटायर सीजन। तो आई थिंक इन ऐसे लेवल के क्लब के खिलाफ जब आप खेल रहे हो, ऑलरेडी आप एक हार चुके हो, प्रेशर तो बिल्ड होगा, मैं कहना चाहूंगा। बट मेरे भाइयों, यारों और दोस्तों को जो भी एटीके मोहन बगान को सपोर्ट कर रहे हैं, अभी भी बिलीव रखो, शायद इधर आपके लिए तो चांस है एटलीस्ट। The irony in your statement. Alright, भाइयों यारों जो भी ATKMB को सपोर्ट करते हो, सीजन ईस्ट बंगाल FC फैन, I think हाजमा नहीं होगा, ये नहीं पच रहा मेरे से। बट यस, आई थिंक जैसे आपने बात करी, वारसी फिनोमिनल प्लेयर, be it Kauman Tikka, be it Shagnik, we know this man can come back from literally anything. Even last season's Vindratej and even Tugal said, like, this man never accepts defeat. So for Hyderabad FC, I think they've got their path quite clear, whereas it's still quite murky for ATK Mohun Bagan. They still have to fight, and getting through co-op is going to be such an arduous task, and it's going to be so difficult because Hyderabad FC, with the experience that you got from Genocide coming in and that never give up attitude,
I think Varsi. It all depends on how Varsi performs today, because Genesis in his individual matchup उन्होंने तो चलिए काम कर दिया, बट वारसी अभी तक के लिए ना थोड़े से लेफ्ट राइट रहे, राइट, जैसे मैंने कहा कि काफी बार गलतियां कर बैठते हैं, काफी बार ऐसे मैचेस हार बैठते हैं जो उन्हें आइडियली नहीं हारनी चाहिए। तो यहाँ पे वारसी को एक अच्छा प्रदर्शन दिखाना पड़ेगा। अगर कोऑप में ही सब मामला खत्म हो जाता है, वहीं पे सेट होता है, सब बढ़िया, एक नंबर। बट अगर नहीं होता है अंडर एक्सट्रीम प्रेशर, क्योंकि यहाँ पे जो प्रेशर है टीटी, ये सात आसमान छूने वाला है, क्योंकि यहाँ पे इन्हें भी पता है कि ये प्लेऑफ्स के बस इतने करीब है, इतने करीब, और एक भूल चूक अगर हो गया इधर सब कुछ चला जाएगा, सारा मेहनत बर्बाद हो जाएगा, और उन्हें फिर से अपेक्षा करनी पड़ेगी, इंतजार करना पड़ेगा अगले सीजन का। एंड और एक सपना जो रहता है कि यहाँ पे व्हेन यू गो ऑन टू विन, आप अगर जीतते हो eISL, तो आपको FGS में स्लॉट मिलने वाला है, वो भी एक नहीं, इस बार 2 प्लेयर्स को मिल रहा है, तो दोनों को ही मौका मिलेगा। तो जब भारत का परचम लहराने का जो अवसर है, वो तो बिल्कुल भी वारसी नहीं गंवाना चाहेंगे, और पिछली बार ही उन्होंने कसम खा रखी थी कि इस बार जब आएंगे कुछ एक अलग वारसी आएगा, और वो हमें दिखा। तो आई थिंक अपने बातों पे वो कहीं ना कहीं मुकम्मल रहे, कायम रहे थे, बट क्या उनमें वो एक्स्ट्रा जो फाइट अभी भी बाकी है, ये एक बड़ा सवाल है। यस, दिस इज व्हाट दिस मैचअप इज ऑल अबाउट, the qualification is on the line, the 5th and 6th spot still up for grabs, because in this matchup it will be decided one team that goes through. In the matchup after this, that is Kerala Blasters FC and Chennai FC matchup, that will also be settled. But there is another story. This is another story, a little out of context. Both these cities are quite famous for their biryanis, right? On one side we've got the Kolkata biryani, and the other side we've got the Hyderabad biryani. And me having personally tried a lot of biryanis, I'm kind of a fan of the Kolkata style biryani, especially because of that aloo. And sometimes the spice is a little too high for me in the Hyderabadi biryani, but there are people that swear by it, worldwide famous. And it's also a biryani debate that keeps on going, so we have to keep you fans engaged also. But in a little time, I think TT, the match is about to start, and मुझे I don't think ये सवाल आपको पूछना भी चाहिए कि आपको कौन सा बिरयानी पसंद है, तो रहने दे। जी हाँ, देखिए कोलकाता बिरयानी ऑब्वियसली, क्योंकि मैं इधर से ही बिलोंग करता हूँ, तो इधर तो कोई बात नहीं है। बट ये टाइम शायद लग रहा है, और ये लगेगा क्योंकि दोनों ही क्लब्स के जो प्लेयर्स हैं वो प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को, क्योंकि यही इसी जगह पे शायद पता चल जाएगा कि क्या होने वाला। अगर इधर ड्रॉ भी निकलता है, फिर भी हैदराबाद, जीतते भी हैं फिर भी हैदराबाद, तो सिनेरियोस तो देखिए कहीं ना कहीं जो है हैदराबाद के पक्ष पे जा चुका है 66.66%। बट बाकी जो 33.33% पोजीशन है, क्या उधर से खींच के लेकर आ पाएंगे या फिर नहीं, वो देखना होगा। बट सिचुएशन वाइज हम देखे हैं बहुत बार क्लच करते हुए, लाइक पिछले गेम पे नहीं हुआ था अफनान की तरफ से, वो अलग बात है, बट अफनान आखिर के मैच में जाके तो बहुत धूम मचाते हैं। लेकिन ये कोऑप गेम जीतना ही होगा उसके लिए, वो चाहे 1 गोल से जीतो या फिर 10 गोल से, जीतना इंपॉर्टेंट है। और अगर नहीं जीते तो कोई सेकंड ऑप्शन ही नहीं है ना, तो सेकंड ऑप्शन ही नहीं है, क्या ही बात करेंगे इस पे, कोई सेकंड ऑप्शन नहीं, जीतो और जीतते रहो। बट या जैसे कि आपने कहा कि जो मेरे भाई यारों, मैंने कहा उस टाइम पे क्योंकि देखिए एक जगह पे रहते हुए ये आखिरी चांस है, तो बीइंग अ बंगाली होना चाहिए, लाइक थोड़ा बहुत कर देते हैं सपोर्ट। चलिए, आप क्लब तो छोड़ के आप स्टेट पे आ गए कि हाँ, अपने स्टेट का क्लब है, तो कुछ तो करना होगा। बट फिर भी तो आपके एटलीस्ट एक तो स्टेट के क्लब है, अभी भी एक कंटेंशन में है, यस, मतलब ओडिशा एफसी। हम तो चलिए साइड में बैठे हैं, अभी पकोड़े खा रहे हैं, तो वैसा वाला हाल हो चुका है, बिकॉज दिस टाइम ऑल्सो एंड फील सो बैड फॉर ओडिशा एफसी, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज द वे Bhagya had played, the way Nate had played, they were looking strong, they were looking good, but it was that I kind of, it comes down to luck, to be honest, at this point with what happened to Odisha FC, because there have been so many of those close games, so many of those matchups, and eventually when we saw Bhagya getting back to his old form, right, his good form, that is when I think the water had already spilled over
from the glass. So there was not much remaining for Odisha FC to salvage, and their run has been pretty much over right now. And yeah, I'm pretty sure that the next season, Juggernauts come back, they're gonna be back with a bang. But yes, this matchup still a lot on the line for ATK Mohun Bagan. I think it was a huge upset when they lost to Jamshedpur FC last time, and that was the co-op matchup, which kind of absolutely stunned them. A 3-0 victory for Jamshedpur FC, and that was a club that had also run out of their luck, run out of their chances of making it to the playoffs. And despite that, they managed to beat them. So this is where that extra doubt must be creeping in their minds. This is where it comes down to proving your mettle. This is where you have to do it all that is required to make it to the playoffs for ATKMB. But for Hyderabad FC, I mean, lately we saw that big win. I think it was against Chennai FC, if I'm not wrong, or was it against Jamshedpur? It was against somebody, but Hyderabad FC had still managed to somehow keep them in contention. It was against Jamshedpur. I think that was, I guess, a victory. Yes, it was a victory. They managed to best them out. But today, in fact, tonight is one of those nights where I think they will have to put it all. And I'm pretty sure you must be hoping what's going on. You're just getting the matchup ready. Once all the players are ready, we'll have the match beginning. Because this match, I'm pretty sure, folks, you're not going to want to miss. Because this match will pretty much decide the fate of these two clubs. और जस्ट ये शायद वो तूफान आने के पहले जो शांति होता है वो शांति है जी। तूफान आना बाकी है और देखते हैं किस तरीके से परफॉर्म करेंगे। देखिए अगर पूरे सीजन की बात किया जाए, शुरुआत तो हैदराबाद एफसी की तरफ से भी काफी अच्छा हुआ था, बट हैदराबाद एफसी के भी सीजन के ऊपर अगर हम लोग थोड़ा नजर डालें तो उतना भी वो एकदम टॉप नॉच था नहीं। बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिनेरियोज आए, बहुत सारे ऊंचे पहाड़ आए जिसको उनको क्लाइम करना पड़ा, कभी कभार वो पहाड़ से गिरते हुए भी दिखे, बट अभी भी वो मौजूद है उस रेस पे और इस बार रेस पे कहीं ना कहीं आगे भी है एटीकेएमबी से। बीच में कुछ टाइम लग रहा था एटीके मोहन बगान जिस तरीके से खेल रहे थे कि एटीके मोहन बगान तो इजी ले रहे, उनके कंट्रोल पे सब कुछ था और उसके साथ वो क्वालिफाई कर गए। गेम हारने के बाद आज जो सिचुएशन बना है ये बहुत ज्यादा मुश्किल पे लेके आ चुका है एटीके मोहन बगान को। और ये कोऑप मैच इतने देर के वेट के बाद शुरू होता हुआ, आई थिंक दोनों ही क्लब्स, दोनों ही प्लेयर्स बहुत ज्यादा डिस्कशन कर रहे होंगे मे बी, क्योंकि उनको भी पता है कि ये उनका अभी तक का खेला गया सबसे इंपॉर्टेंट गेम है। इसके बाद और एक क्लब जो है वो हंसने वाले हैं और एक क्लब दुख के साथ जो है उनको वापस जाना होगा इस पूरे टूर्नामेंट से, eISL सीजन 2। और देखिए हो चुका है शुरू और हैदराबाद एफसी अपने पहले अटैक के लिए भी बढ़ते हुए। Yeah, Hyderabad FC from right to left. Again, Genesis and Warsey, a very important matchup, a matchup that decides the fate of these two clubs. One goes out smiling, prepping for the playoffs, and the other just left, drowned in agony and pain. This is a high-stakes matchup, a matchup that you wouldn't want to miss. And Hyderabad FC, they've been looking attacking. They have come with the intent of scoring that early goal. Look at how they're kind of trying to fight for the ball, regardless, not just letting ATKMB enjoy a lot of possession. And ATKMB, I think they figured that one out. And so far, the co-ops have been their weakest suit. But tonight is one of those nights where they have to change it, rewrite their script, and head on to the playoffs. But yeah, ATKMB with R9, just keeping the ball solo, still managed to steal that one away. Went for a step over, did not work out. Hyderabad FC saw it coming from miles apart. हाँ, और देखिए इधर जिस तरीके से अभी तक गेम चल रहा है उसके हिसाब से कुछ भी कहना बहुत तो मुश्किल है ही है।
बट हैदराबाद एफसी अभी तक अटैक्स तो बना चुके हैं बहुत बार। वो अभी कन्वर्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे वो अभी देखना होगा। उसी टाइम पीरियड के ऊपर वर्जिल वैन डाइक टू हकीमी और बॉल ले लिया जाएगा एटीके मोहन बगान की तरफ से, और एटीके मोहन बगान फुल्ली अभी के लिए तो कंट्रोल पे है। बॉल निकालेंगे बट ऑफ साइड पे फंस गए थे। ऑफ साइड का विसल इधर बजा और उसी के साथ साथ इधर फिर से धीरे धीरे करके बिल्डअप पे जा रहे हैं हैदराबाद एफसी। हैदराबाद एफसी का ये चीज काफी अच्छा है कि वो अटैक रोकते नहीं है। इस बार पास देने की कोशिश था टुवर्ड्स एम्बापे, बट वैंडे सार सही टाइम पे बॉल को पकड़े जिसकी वजह से वो पहुंच नहीं पाया। तो अभी के लिए ठीक ठाक पोजीशन पे तो है, ठीक ठाक इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि जितना जरूरी है, और अभी तक किसी ने कोई भी गोल कंसीड नहीं किया है। ATKMB एम्बापे थे टुवर्ड्स थियो हर्नांडेज, बट इस बार देखिए इस बार प्रॉब्लम होगा। इस बार दौड़ते हुए दिखेंगे और ये ट्रांजिशन हो चुका है। एक और पास और काम तमाम हो सकता है। देखिए पूरा गैप को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है लेफ्ट हैंड साइड से। कैप्डेविया नो, कैप्डेविया अगर रन निकाल लेते तो शायद और भी एक वेल ऑर्गेनाइज्ड अटैक देखने के लिए मिलता, बट थोड़ा टाइम लिए जरूर। लेकिन लियोनेल मेसी के पैर पे बॉल फिनिश किया हैदराबाद एफसी। जीत के अगर खत्म करेंगे तो उसी के साथ साथ एटीके मोहन बगान का जितने भी सपना है वो इधर ही खत्म होता हुआ दिखेगा प्लेऑफ्स में जाने का। एक गोल आ चुका है, पहला गोल दाग चुके हैं हैदराबाद एफसी। एटीके मोहन बगान के लिए धीरे धीरे मुश्किलें बढ़ता जा रहा है और इस बार तो माउंट एवरेस्ट आ चुका है उनके सामने। क्लाइंब करने के लिए दोनों को बहुत ही ज्यादा कोऑर्डिनेटेड वे पे परफॉर्म करने की जरूरत है। अगर विकी क्लाइंबर होंगे तो इधर शेरपा बनना होगा अफनान को, और ये टाइप का बॉन्डिंग चाहिए अगर आपको ये पहाड़ क्लाइंब करना है तो। देखिए सेकेंड अटैक बनाने के लिए जा रहे हैं, मौका इधर बनता हुआ दिख रहा है, बट बहुत ही ज्यादा क्लोज पोजीशन से बॉल को डिफेंड किया जाएगा। एम्बापे रन निकाल चुके हैं, पास जाने वाला है, यस फाइनली टुवर्ड्स एम्बापे। एम्बापे काउंटर पे क्या वो कर पाएंगे गोल? नो वे, बहुत तक अपने पैर पे बॉल रख गए। पूरा पहले भी अगर शॉट लेते तो शायद ये गोल आता हुआ दिख सकता था। ATKMB बहुत शानदार एक मौका गवाते हुए। Yeah, and that's gonna hurt them. They could have done 47 other things there, but sadly, a little heavy on the ball on that touch, especially when you concede one and you know this is a must-win game for you. You cannot afford such mistakes, and this is where the tension has gotten tenfold for ATKMB. They not only need to draw this game or find a draw in this game, but also get that win, that equalizer and the win. But yeah, such has been the intensity of this matchup so far. Hyderabad FC finding that one goal lead TT, and this is where the dynamics have changed. This is where Hyderabad FC look a lot more comfortable. They know they are just moments away from glory, as now this is what a goal advantage can do to you. You have avenues like that. You have options where you can literally take those chances, and if it gets converted into a goal, it's one worth remembering. बिल्कुल, देखिए इधर कोई भी गोल एक मेमोरी बन जाएगा, और अगर इधर से कमबैक कर पाते हैं एटीके मोहन बगान तो ये मेमोरी जो है उनके हिस्ट्री पे गोल्डन अक्षर से लिखा जाएगा। बट सिचुएशंस जो है वो अभी उनसे बहुत ज़्यादा साउथ जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि एक गोल भी आ चुका है हैदराबाद एफसी की तरफ से और अभी तक उतना ज़्यादा अटैक दिखा नहीं है। और जिस बार मौका मिला था कि श्योर शॉट एक इक्वलाइजर आ सकता था विद एम्बापे, उधर डिले कर दिए। बट हाँ, फर्स्ट हाफ का गेम इधर ही खत्म होता हुआ विद द सोशल, और इसके बाद जाके किस तरीके से मौका बनाएंगे एंड ऑल वो देखना होगा। एक भी शॉट इधर अभी तक लिया नहीं गया है एटीकेएमबी की तरफ से, बट ऑन द अदर हैंड हैदराबाद एफसी 3 शॉट लिए जिसमें से 2 एक शॉट ऑन टारगेट देखने के लिए मिला और उसी पे गोल भी आता हुआ दिखा था। पोजीशनिंग में ज़्यादा कुछ गैप नहीं है, लेकिन एक चीज़ तो कह सकते हैं
कॉन्फिडेंस में कहीं ना कहीं गैप दिख रहा है। Yeah, I mean, the stats, possession stats, like you said, not a lot of difference, but they haven't taken a single shot. They haven't gone for it, which sort of, reciprocates with the pressure that they're playing under, right? And this is where I think Afnan has to channel his experience, because not just that, he's playing against Genesid and Varsi, and he's one of those players that has been a part of the previous eISL, and not just uh, being a part, but had also made it to the playoffs. We have seen this player, growing right in front of us, and today he's sort of been a man from that kid, that nervy kid who once used to kind of be always under tension, always under pressure, which was quite which was quite the fact when Dugal even came up. Afnan was a very quiet kid, did not talk to a lot of people around, but once he got comfortable, then we could see him just gelling up with the others, and not just gelling up with them from going on to play cricket and football in their hotels. He's learned a lot and he has grown. And tonight is coming down to Afnan. Does he find that extra edge? Because, like we have already discussed, folks, for ATKMB, it's not just going to be a draw where they can settle with, right? They will have to fight for that victory. And this has to be done right here, right now, in this co-op game as we commence with the second half. And Hyderabad FC, right off the bat, looking quite deadly. But ATKMB quite nervy, but still made sure that the defenses did not shatter. और देखिए शुरू होते ही होते इधर एक मौका भी बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन देखिए मौका तो पिछले हाफ में भी बना था, कैपिटलाइज नहीं कर पाए, इधर कन्वर्ट करना होगा गोल पे, बट बहुत शानदार चार्ज जिसके थ्रू बॉल भी छीना गया, काउंटर पे भी जा रहे हैं रोनाल्डिनियो टू रोनाल्डो, एक पास बीच में और खत्म हो सकता है कहानी। यस, एक पास बीच में और एम्बापे, कहानी इधर खत्म होता हुआ दिख रहा है एटीके मोहन बगान के लिए। पिछला गेम हार गए थे 1-0 से, ये गेम पे ऑलरेडी 2 गोल कंसीड कर गए। अभी आखिरी कुछ मिनटों पे, आखिरी कुछ 37 मिनट्स के आसपास टाइम बाकी है, जिसपे 3 गोल स्कोर करने हैं। इम्पॉसिबल है ऐसा नहीं है, लेकिन जिस तरीके से गेम खेल रहे हैं हैदराबाद एफसी, वो करने बिल्कुल भी नहीं देने वाले, क्योंकि एक गेम पे सिर्फ एक ही कमबैकिंग हो सकता है, 2 तो नहीं। तो शायद कहने के हैदराबाद एफसी ये मेक श्योर करेंगे कि जो वो करते हैं सबके साथ, उनके साथ वो ना हो। Yeah, I mean, at this point, TT, to be honest, of course, that first strike, again, that synchrony, the symphony of passes being there. But this one was so well scripted, right? This was exactly how they had pictured in their mind and made it a reality. And from here onwards, for ATKMB, it's quite ghastly, quite appalling. How do they get back? Having to score not just 2 but 3 goals, with Hyderabad FC starting to, completely take over this matchup. Just a mere 2-0 lead, but feels like it's 5-0 up at this point. ATKMB, they have been creating chances nonetheless, TT, but the point is that their touches on those final thirds have been so heavy, right? The previous chance we had seen just a couple of moments ago, even with Ruud Gullit, not able to control the ball, and this all comes down to the fact that pressure is starting to eat them up. ये तो अभी प्रेशर जिस जगह पे पहुंच चुका है, उस जगह से इनका प्रेशर तो और कम होने वाला है नहीं, और उसी प्रेशर पे एक और गोल आ सकता था, अभी आ सकता है। ओह माय गॉड, वैंडे सार जाते जाते कह रहे हैं नहीं, ये बॉल मुझे दे के जा ठाकुर, और उन्होंने बॉल जीता। बट देखिए जिस तरीके से इस बार गैप्स ढूंढा जा रहा है हैदराबाद एफसी की तरफ से, एक चीज तो पक्का हो चुका है कि वो क्वालिफाई करने वाले हैं फॉर द प्लेऑफ्स। Oh my god, I mean, this body language, you could see completely 2 different sides over here. One side, Hyderabad FC now starting to chill a little bit,
quite relaxed, quite poised. On the other side, tension. ATKMB, they're fighting for survival. They're fighting to live another day in the eISL, and no way this happens. Ah. And at this point, you would start guessing, right? What's going on in the game? How are things about to play out? Who gets to be the victor? What will be the outcome? Because two ways. I mean, if we lost connection to the game, then the game continues, and in just a few moments, our producer is gonna give us the results. But if it is a disconnection from the player side, then we're gonna start over again, which means that the players will have full stamina. So then we'll not see them making those substitute changes. We're just gonna see them making a few changes in their formation and their tactics, which could be really enormous. But for what it's worth at this point, I think ATKMB, we need that glimmer of hope from them. That one goal, I think, could instantly change the weather, which is so gloomy. Suddenly it's getting cloudy, it's about to rain, it's gonna just wash away all their hopes of making it to the playoffs. That one goal could just pierce through the skies and create that weather where they kind of go on and kind of get that equalizer and then fight for that winner, right? But if that's gonna be happening or not, I think time is just about to tell. यस, और अभी के लिए देखिए हम लोग तो जस्ट एज्यूम कर सकते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बट हाँ उसके बीच में आप लोगों को कुछ मज़ा दिलाते हैं पिछले कुछ वीक्स के भी, जिस तरीके से बहुत सारे हम लोगों को कंटेंट मिले हैं वो आप लोग एंजॉय कीजिए। उसके बीच में हम लोग मिलते हैं कुछ देर के अंदर। Pacing through that right wing and is so calm on his build-up, right? Wow! Can do things like this. Look at that! लेकिन बैंडसार, माय गॉड, देव तो कर चुके हैं बट खतरा नहीं टला। बेलिंगम, what a Cannot just settle with a draw. Cannot fight for only 1 point. They need all the three. And this time, good chain of passes with Mbappe. Have a 9 to go for another pass. On to have your majority of your attackers playing back a little bit, going for the defense, but with Lionel Messi. Oh, it was a little bit of a scrappy play. And if he nets it at this point, then it's pretty much done and dusted. But a beautiful pass onto it, Pele. He's got to show that patience, and he does. He's done that.
वो जगह ही, वो चाबी नहीं मिल रहा, मिला Oh! लेकिन हेडर Which he has to chain a few more passes, recycle the ball. Good passing routine. यस, मुझे भी लगा था शायद हो जाएगा। वाओ, व्हाट अ पास टुवर्ड्स पेले। Oh no! A player lock on towards MP. Passes on to it. Pele takes a shot. बहुत पहले से रोनाल्डो के ऑफसाइड पोजीशन पे मौजूद थे, तो ये कभी-कभार हो जाता है Wow! मोमेंट। Pacing through that right wing and is so calm on his build-up, right? Wow! Can do things like this. Look at that. लेकिन वैंडसार, माय गॉड, सेव तो कर चुके हैं बट खतरा नहीं टला। बेलिंगम, व्हाट अ Cannot just settle with a draw. Cannot fight for only 1 point. They need all the 3. And this time, good chain of passes with Mbappe. Have a 9 to go for another pass. On to have your majority of your attackers playing back a little bit, going for the defense, but with Lionel Messi, oh, it was a little bit of a scrappy play. Wanted to take, and if he nets it at this point, then it's pretty much done and dusted. But a beautiful pass onto it, Pele. He's got to show that patience, and he does. He's done that. I'm pretty sure you must have been enjoying all those goals and those saves for the past few weeks. And you know, I still feel this video cannot justify the quality we have seen from all these players. You know, the span throughout, you know, those matches that we had. But yeah, we have come back with a decisive result. We know where it is headed to, and if just cues the result right in front of me in just a bit, there you go. So yes, Hyderabad FC have already solidified, and finally they've done it and have gone in to the playoffs. We will be seeing more out of these two lads, Varsi and Genesis. Congratulations on this victory, and the qualification now it is set in stone. But well, the curtains have fallen for ATK Mohun Bagan, and the sun has set across the horizon. We're hopeful for a new tomorrow, but that's not going to happen. They will have to wait yet another season to achieve it. But yeah, so far, TT, they have had a really nice run, but just missing away, it kind of hurts, especially it's that one game that decides and you lose. एंड आई थिंक इस जगह पे पहुंचने तक भी जो जर्नी उनके तरफ से था, वो शुरुआत हुआ था हार के साथ, फिर कहीं ना कहीं एक बूस्टअप मिला डर्बी के बाद, और उसके बाद वो जीतते चले गए, ड्रॉज निकाले, बहुत टफ मैचेस पे उन्होंने ड्रॉज निकाले हैं, और आखिरी इस मौके पे आके कहीं ना कहीं वो जस्ट कुछ भी अपने कंट्रोल में नहीं रख पाए। पहला दोनों गेम उनके हाथ से निकल गया, और एक सिंगल गोल अभी तक उनकी तरफ से देखने के लिए नहीं मिला है। सो या आखिरी गेम अफनान के हाथों पे ज़्यादा कुछ तो नहीं, बट जाते जाते शायद कुछ गोल्स करके जा सकते हैं, आखिरी कुछ वो मोमेंट्स के लिए, वो खुशी
मे बी नहीं देखने के लिए मिलेगा उतना ज़्यादा जितना हम लोग को यूजुअली देखने के लिए मिलता है वो गोल स्कोर करने के बाद। बट फिर भी जाते-जाते थोड़ा बहुत तो सैटिस्फाइड होंगे कि वो अपने गेम को लेके कि हाँ, मैंने तो किया है और मैं करता जाऊँगा। क्योंकि इस बार अगर देखा जाए इस सीज़न पे अफनान ने उनके क्लब के लिए बहुत कुछ किया है। देखिए उनके लिए सीज़न उतना ख़ास था नहीं और हो जाता है कई बार कोई भी प्लेयर की अगर बात करो फॉर्म में अप्स एंड डाउन्स चलते हैं। लेकिन अगर दोनों प्लेयर में से एक एकदम प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो से चल रहे हैं देन उसका इफेक्ट ओपोनेंट लाइक उनके ही दूसरे प्लेयर के ऊपर भी आता है। सो वही चीज़ जस्ट इधर होता हुआ दिखा। बट आखिरी गेम है, देखते हैं इधर वॉरसी एक तरफ, दूसरी तरफ अफनान। वॉरसी तो वैसे वो चाहे लाइक वो तो एकदम फुल्ली फोकस्ड होके ही खेलते हैं यूजुअली और वो कैजुअल खेलेंगे भी नहीं क्योंकि उनको पता है जस्ट प्लेऑफ्स कुछ दिन बाद ही है। तो यही कुछ मौके है, ये उनका आखिरी गेम है, तो जितना प्रैक्टिस करना है कॉम्पिटिटिव लेवल पे उनको कर लेना है। इसके बाद तो नॉर्मल प्रैक्टिस करेंगे, बट कॉम्पिटिटिव लेवल पे ये उनका आखिरी प्रैक्टिस होने वाला है। सो देखते हैं किस तरीके से आता है आगे। Yeah, and we've seen in certain scenarios kind of RC tends to drop these games, but it would be absolutely tormenting for young Afnan, right? At this point, he knows that no matter what the outcome of this game is, he's not going to get any point, and their hopes of making it to the playoffs end here, right? No matter if he scores 10 or 20 goals, he's not going to be in the race anymore, and he still has to act like a man, has to play that final game for formality, and it's kind of dreadful to watch him at this point, right? And especially a player who's already made it to the playoffs once and not being able to make it for the second time, that hurts. And yeah, so has been the format of eISL, right? It's not just your individual prowess that can win you games, right? Even as a team, when it matters, you have to work it out. And sadly, ATKMB, I think, just fell short in that aspect. And this is one of those seasons where, yeah, had they worked over with that co-op matchup, things could have been a lot more different. We would have seen them in the playoffs. But what's done is done. We get to enjoy a final match as Afnan will, just try his hands out and trying to best out Varsi over here. He takes that shot. Oh, I don't know. I don't know how Afnan missed that one. जिस जगह से उन्होंने शॉट लिया था देख के तो लगा शायद नेट्स के अंदर चले गए, बट वो गया नहीं था और देखिए गोल तो आया नहीं। बट अफनान के चेहरे पे वो एक कहने की आग दिख रहा है, वो एक गुस्सा कहने के नजर आ रहा है। तो वो कहने के हम लोग को एज अ आउटकम में भी इधर देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन उसके ऊपर तो बात चल ही रहा था, उसके बीच में वॉरसी कह रहे हैं कि अभी भी गेम खत्म नहीं हुआ। उन्होंने भी जड़ दिया एक गोल, पहला गोल एक बार फिर से हैदराबाद एफसी की तरफ से। टिल नाउ एक भी गोल आता हुआ नहीं दिखा एटीके मोहन बगान की तरफ से इस पूरे एंटायर मैचअप के ऊपर। बट हैदराबाद एफसी हमेशा पहले आप पे कम से कम एक गोल स्कोर किए हैं। Yeah, and for Varsi, he knows that, he just has to keep his temperament going, and he's good to go, right? Has no pressure at all. He's kind of still hiding that happiness of making it to the playoffs. For the first time, he's done it. Last time, he missed out with Shagnik when he was playing for Bengaluru FC, but this time, not just Bengaluru FC has qualified. In fact, Varsi and Sagnik both have made it. So a little bit of a personal achievement there also. He had a friend, partner like Genesis to help him out, and both these players have performed when it mattered. So for Hyderabad FC, yes, there have been hiccups during those mid phases, but I'm pretty sure by the time the playoffs come up, they would have worked on it, and we get to see even a more formidable, deadlier version of Hyderabad FC. We know their untapped potential, and they're yet to give their best. But Afnan, there you go. He's not going to celebrate his goals. He knows the outcome. He knows the inevitable has happened, and he's on the receiving side of it. Despite that, getting to watch Afnan play sort of makes me happy. This player is at such a young age. He's doing so much, and he's got such a bright future ahead of him. Coming in paired up with Vicky, one of the older players in the community
Of course, he still did feel those nerves, but yes, these boys fought really well, and it's going to be sad that we don't get to see them in playoffs. But that's the way of life. They learned something from here. The next time is going to be really strong for these kids. बिल्कुल नेक्स्ट सीजन के लिए अभी तो वेट करना होगा, बट इस सीजन पे भी जाते जाते कुछ गोल्स जो है वो जरूर स्कोर करने की कोशिश करेंगे, जो कि ऑलरेडी एक कर चुके हैं। और देखिए फिर से एक अटैक बन चुका है, बट इस बार डिफ्लेक्ट हुआ और कॉर्नर के लिए जाता हुआ। अफनान की अगर बात किया जाए, उनके एक चीज़ तो काफ़ी अच्छा है कि वो अगर एक बार अटैक करना चालू कर दिए तो वो करते ही रहते हैं और वो रुकते नहीं है। वो बैक टू बैक एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा अटैक वो करते ही जाते हैं जब तक कि उनको गोल नहीं मिल जाता। देखिए जस्ट वेट कर रहे थे, रुके, इधर वॉर्सी कोशिश नहीं कर पाए और जब किए तो वो फॉल्स हो गया था। बट काउंटर पे वॉर्सी, पेस थोड़ा कम है लियोनेल। No way, Varsi, come on. Far shot. Oh God, and he's gonna take these chances. No TT. देखिए पावर शॉट कभी कभार हो जाता है ऐसे बाहर। ओ एसआर को तो बीट कर गए थे, लेकिन डिफेंस लाइन पहुंच गया था। बट वॉर्सी आज देखिए, आज वॉर्सी फुल्ली एंजॉय कर रहे हैं उनके गेम को, क्योंकि उनको उनसे ज़्यादा खुश अभी और कौन ही होंगे। लेकिन हैदराबाद एफसी से ज़्यादा खुश कौन होंगे। आखिरी मोमेंट के लिए उनको रुकना पड़ रहा था और उसके बाद जब उनको पहले ही 2 गेम पे पता चल चुका है कि यस दे आर क्वालिफाइड फॉर द प्लेऑफ्स, तो इनसे ज़्यादा खुश और कौन हो। सो इसी वजह से वो एंजॉयमेंट दिख रहा है उनके गेम के अंदर, फ्लॉलेसनेस दिख रहा है। ऑन द अदर हैंड अफनान वो अपना बेस्ट है। At this point, for Afnan, yeah, of course, he's managed to score an equalizer. And at this point, you know, he must be having so many thoughts reeling over his head, right? Had I gone first, maybe things would have been different. Had we scored, no, you know, had we scored in the co-op game, had we won a few more matches, then things would be otherwise. We would have been in a better position. And so much going in that young mind. But then also he has to accept that reality. But now look at that attack with Theo Hernandez hoping for a cutback. Yes, gets it, goes for that extra pass, but no, I think that was a deflection that came out from the defender. Yes, indeed, was the case. Went out for a corner, now goes for a Trivela. Come on, that was great timed also. So I like it. I like what Afghan's up to. And if he keeps on doing that, you never know, might just end his run with a victory. The final matchup for ATK Mohun Bagan. The last time we get to see them in their jersey, at least in this season. Hoping that in the next one, we finally hope that the drought for making it to the playoff ends. ये भी होप चलता हुआ, इस बार मौका भी मिल चुका है, फिनिश भी कर चुके हैं। दूसरा गोल आता हुआ एटीके मोहन बगान की तरफ से, जाते जाते जीत के जाना चाहते हैं और अफनान उसी राहों पे भर चुके हैं। एक गोल का फासला बना चुके हैं हैदराबाद एफसी से। और देखिए इस बार वॉर्सी, उनका क्या अप्रोच रहेगा, क्या वो चिल करेंगे या फिर वो गोल के लिए वापस जाएंगे। मुझे तो लगता है कि शायद वो इक्वलाइजर एंड मे बी वो जीतने के लिए भी वापस जाए। बट ये था फर्स्ट हाफ का एक्शन जिसपे एटीके मोहन बगान सबसे पहले पिछड़ते हुए देखने के लिए मिले, लेकिन जो अटैक था वो सबसे पहले एटीके मोहन बगान की तरफ से ही आया था, जो कि गोल नहीं हुआ था। उसके बाद काउंटर पर हैदराबाद एफसी ने गोल किया एंड बैक टू बैक 2 गोल्स आते हुए देखे अफनान की तरफ से, और अभी के लिए एटीके मोहन बगान 2-1 से आगे ये आखिरी गेम के ऊपर। सो यस, इसका रिजल्ट कुछ भी आए उससे ज्यादा कुछ तो चेंज नहीं होगा पॉइंट्स टेबल के ऊपर, लेकिन जाते जाते एटीके मोहन बगान एक प्राइड के साथ, एक प्राउड पोजीशन के साथ जो है वो फिनिश करना चाहते हैं। Yeah, of course. I mean, he would do that. But at this point, you know, TT, yeah, Afnan, go for it. We want to see
maybe a Trivela or maybe something beautiful. Regardless, takes that shot, but Van der Sar just goes on, saves the day. Out for a corner. Play through to Hullet. Into it, shoot Bellingham going for a player lock. Interesting. With Virgil van Dijk, I'm not going to be surprised if he even takes a shot. But what? A pen. A gift from Varsi nonetheless. And Afnan, he's not going to crush. He is in fact going to take the chance. Says thank you Varsi. Consolation penalty again for ATK Mohun Bagan as they go 3-1 up. जी हाँ, जाते जाते जो ये गोल्स उनको मिल रहे हैं उसके लिए वो बहुत ज़्यादा खुश होंगे। इस बार बॉल भी एक गलत पास के वजह से जा चुका है एटीके मोहन बगान के पास। तो वॉर्सी गलतियां तो बहुत सारे कर रहे हैं आज इस गेम पे। बीच में बॉल रोनाल्डिनियो, कोशिश था कि वो एकदम बीचों बीच डिफेंस को तोड़ के वो अंदर निकल जाए, बट वो होने नहीं दिए। डिफेंस अच्छा था बट फिर भी अटैक टूट गया, ऐसा नहीं था। बट फाइनली जाके एक प्रॉपर पोजीशन पे बॉल कंट्रोल मिलेगा वॉर्सी को। एंड क्या वॉर्सी इधर काउंटर पे हिट कर पाएंगे या फिर नहीं, वो देखना अभी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेफ्ट हैंड साइड से थियो हर्नांडेज रन निकालने की कोशिश कर रहे थे बट शायद उनको इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि लाइक स्टे बैक, तो इसी वजह से वो ज़्यादा आगे ओवरलैप पे गए नहीं। बट लियोनेल मेसी टू हुली से बेलिंगम में उनके बाजू में, लेकिन वो रोनाल्डिनियो के लिए गए टू रोनाल्डो। शानदार था ये पूरा मूव, बेहतरीन बिल्डअप और बेहतरीन फिनिशिंग। 3-2 और धीरे धीरे करके कम बैक के राहों पे वारसी। Yeah, and at this point, you know, Varsi kind of tends to let go of these games. We've seen even that matchup against DK, if my memory serves me right, the past one. They kind of bottled that. In fact, Varsi did lose that. So, yeah, I think he's been having those phases, right? Where we kind of haven't been in that form where we could, in that position where we could say that Varsi has been completely consistent. There have been games where it has been absolutely crushed. So, yeah, Varsi has got to work on that aspect. So, he's got a lot of time till the playoffs, and this is where we get to see all these players on land. That's what I'm the most excited about, TT. And even I think you're going to be in person, so we'll also meet, and that's going to be even better. Everybody is going to be happy once it's land time, it's show time. And on land, TT, the pressure, it's going to be different, right? It's going to be a whole different league because there are certain clubs who really thrive under that, and there are certain clubs that is too much for them to handle. And even now, as the storyline says, so one thing for sure, we know that Hyderabad FC, they're qualifying. But hey, folks, we still have one more slot. And ATKMB is not going to be one of them. It is going to be the next matchup that we have for you. Another showdown between two of the biggest clubs. But hold on, Varsi offside. But yeah, getting back to the conversation, TT. So the next matchup is going to be about Chennai FC and Kerala Blasters FC fighting it out for that final spot. Whoever is the winner, it's going to be a similar storyline where Chennai FC can afford a draw, but for Kerala Blasters FC, it has to be a must-win game. बिल्कुल बिल्कुल, और देखिए वो जगह पे भी सिचुएशन कुछ इस गेम के तरह ही रहेगा। केरला ब्लास्टर्स आखिरी गेम पे जब भिड़े थे वो एटीकेएमबी के साथ, तब तो परफॉर्मेंस काफी अच्छा था। कॉन्फिडेंस एंड मोमेंटम दोनों ही उनके पास है। चेन्नई एनएफसी, उनको ड्रॉ से भी काम चल जाएगा क्योंकि 11 पॉइंट ऑलरेडी उनके पास मौजूद है। तो देखिए सिनेरियोज बहुत अलग है, बट रिजल्ट पे सिर्फ एक ही का नाम लिखा हुआ रहेगा जो प्लेऑफ्स पे क्वालिफाई करने वाले हैं। तो उसके लिए तो हम लोग वेट करेंगे ही करेंगे। और ये गेम भी काफ़ी ज़्यादा रोमांचकर पोजीशन पे पहुंच चुके हैं, जिधर हम देख पा रहे हैं कि इधर वॉर्सी भी इतना इजीली छोड़ने वाले प्लेयर है नहीं। हालांकि वॉर्सी तो हम जानते ही हैं कि 2 गोल का लीड जो है वो तो कुछ भी नहीं है उनके लिए अभी। तो हालांकि 1 गोल का लीड बचा हुआ है सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि इसके पहले हम लोग 3-3 गोल करते हुए देखे वॉर्सी को आखिरी के 15 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर। तो वॉर्सी कर सकते हैं, बट देखिए एक और मौका मिलता हुआ और 2 गोल का फासला। अफनान चौथा गोल इधर दागते हुए।
और ये शायद एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे वॉर्सी। But yeah, at this point, Afnan, the final hurrah for him, and he goes out with a win. He's been the hero for ATK Mohun Bagan and certainly shows another master performance and could get another one also. But yeah, Varsi was attentive, was alert, did not let this pass. But yeah, now with just 15 minutes into this game, I think not much to lose for Varsi to be honest, and not much to be won for Afnan. And this is sort of an exhibition matchup that we have had, in which ATKMB they finally at least do not give a whitewash to Hyderabad FC. But now Varsi could score maybe that third one. I could see it coming. We almost had smelled it, but no, it did not go accordingly. A little bit of those heavy touches, and yeah. So Hyderabad FC, they've got a task on hand. They have to work out on those few fallacies that they've been having. They need to be airtight, because from here on, when you get into the playoffs, you have the top 6 teams. So you cannot leave any corners unchecked, right? You have to make sure everything is perfect. It's A-OK, because then those clubs otherwise would absolutely crush you, because you have we've got the big dogs fighting. But in those final 8 minutes in the match, it looks pretty long for Afnan. He still got his focus though. Gotta give credits to him, especially fighting under such circumstances, fighting these lost battles. He's doing really well. बहुत ही शानदार ये फाइट चल तो रहा है और बहुत अच्छे से फाइट दे भी रहे थे इधर अफनान, और अभी के लिए एडवांटेज में भी है। ऑन द अदर हैंड वॉर्सी कोशिश पूरा किए कि वो इधर से लेके जा पाए, बट अफनान खेल गए इधर, सिर्फ बॉल के साथ ही नहीं, वैंडेसार के साथ भी और वॉर्सी के पूरे टीम के साथ खेल गए। जस्ट राइट लेफ्ट किए, वैंडेसार पूरा ही कंफ्यूज हो गए, और उसके साथ साथ ये गोल आया। तो 5वां गोल जाते जाते मार के गए, और अफनान ये बता के गए कि नेक्स्ट साल जब आएंगे तब शुरुआत से ही धूम मचाएंगे। Yeah, I'm pretty sure with the way Afnan has performed as he nets one more. This is what I was telling about Varsi. Once, things go wrong for him, then there's no stopping. It just keeps getting worse. And his defense is one of those areas he really needs to work out, because, Afnan now at this point, this was I think an L2 finisher. He's scoring goals for fun. So, yeah, Afnan, I think, has made sure it is a war cry from his side. I'm pretty sure he's going to be retained by ATK Mohun Bagan. The way this lad has played and performed this entire season has been phenomenal, right? And no surprises if we see him again representing the Mariners, especially the way he got them that victory against East Bengal FC, but an absolute screamer from Varsi. There you go with Eusebio, shoots one through, but yeah, he can just let out that chuckle, right? He knows that yeah, he's lost this game, but the job has been done. Hyderabad FC, no matter what happens, will still be the ones, folks, making it to the playoffs, and that is full-time whistle being blown. Hyderabad FC and their fans quite happy tonight as they secure, solidify and cement their spot, and will be one of those top 6 teams that goes on to play inland and will be with us. Really excited to see these players in person and TT. But yes, gloomy days for ATKMB. Despite Afnan winning his individual matchup, despite him winning this battle, he's lost the war. Yes. Overall, काफी अच्छा एक ट्राई था, by the way, from the side of ATK Mohun Bagan. शुरू में एक बार कहानी देखिए फिर से सेम रहा। पिछले गेम पे तो हालांकि अफनान भी हार गए थे, लेकिन पूरे सीजन की अगर बात करें, अफनान ने बहुत ट्राई किया, बहुत ऐसे सिनेरियोस थे जिधर से वो बाहर निकाल के लेके आए थे अपने क्लब को,
जिताए थे अपने क्लब को, और वो जाते जाते भी 6 गोल स्कोर करके गए, वो भी किसके खिलाफ? वॉर्सी के खिलाफ, जो अपने टीम के लिए सेवियर रहे हैं बहुत बार। काफी अच्छा गेम था। यस, इस साल तो हम लोग नहीं देख पाएंगे इनको प्लेऑफ्स में, बट फॉर श्योर नेक्स्ट ईयर। लेकिन ऑन द अदर हैंड हैदराबाद एफसी, इनके अगर बात किया जाए तो इनके लिए भी जो जर्नी का शुरुआत था वो था ग्लोरियस। बीच पे अचानक से इनका जो ट्रेन है वो पटरी से उतरता हुआ दिखा, और वो ट्रेन पटरी से कभी उतर रहा था, कभी ऊपर जा रहा था, और उसी तरीके से चलते चलते आज फाइनली पटरी पे जा चुका है। एटलीस्ट इधर प्लेऑफ्स के स्टेशन के पहले से तो रुकने वाले नहीं है, बट उसके बाद क्या होगा वो तो हम लोग को लैंड पे ही पता चलेगा। Yes. But yes, for Hyderabad FC, yeah, they have done it. And not the fashion that they would have thought of, especially with having this duo, this combination. But yes, well, the job's almost done. I mean, it's pretty much done at least. They've made it to the playoffs, have secured their spot. But from here onwards, you know, it's going to get much more tougher, TT. But we know both these players have played on LAN, right? If it's the first for Genesis, at least in the eISL. But if you look at his cumulative experience, he's one of those big fours, right? And the way he's been performing, he's been a stellar form. And we're just going to expect bigger things from this player. Along with Varsi, he's got a lot to prove, right? Those things that remained last time incomplete, that mission to clinch that trophy, being the champion of eISL. I think Varsi gets yet another shot at fulfilling that, and this is where he has to kind of turn his words into gold. And with that being said, let's take a quick look at the scoreboard. And for the one last time, ATKMB, there you can see those faces up. Afnan, a beautiful 6-3 win against Varsi, but it is Hyderabad FC who have won the series, have secured those 3 points. With that, they move on to 14 in total, and that is enough to make sure that the 5th spot is theirs to take. यस, तो फाइनली इधर 5th स्पॉट पे पहुंच चुके हैं हैदराबाद एफसी, और उसी के साथ आई थिंक इधर एमवीपी कौन है वो हम लोगों के मन में तो डाउट नहीं होगा। जिस तरीके से इस पूरे एंटायर सिनेरियो पे बहुत शानदार तरीके से परफॉर्म करके गए, एमवीपी इधर बन चुके हैं वॉर्सी। How? I really thought maybe it would be a battle between Afnan or maybe Genesis, because Genesis' Yeah, individual victory that would have settled, and it's Varsi. All right, interesting. I mean, for the first time, even Varsi would not be expecting that, and even none of the fans also, because had it been towards Afnan, yeah, the courtesy for scoring 6 goals, we do not see that happening every day in eISL. That could have been still understood. Otherwise, I felt it was Genesis, but regardless, it is going to be Varsi. It is what it is, folks. And Hyderabad FC, regardless, have won their match, and they will be playing in the playoffs. So that has been already set, and yeah, the players would be really happy. Even I'm happy for them, but there is again that other half of me which is kind of equally sad for ATK Mohun Bagan, because seeing these two players play, I kind of had my heart running, and I felt that maybe that comeback story would have been real for them, but the task was too difficult for them to handle, and they crumbled under pressure. And this is where Vicky must be just taking all that responsibility over him, because that matchup against Genesis, it was so tight, it was so close. Those heavy touches there, he must be cursing himself, but that's the harsh reality. Sometimes you move ahead, sometimes you just take a back seat and introspect. But what's done is done, and that being said, we are done with yet another fixture. But we know we've got our 5 teams who go on to play for the playoffs, but we still are in pursuit for that one extra club. Who is it going to be? To find out, stay with us, and we will be right back after this break.